Nama Bengaluru, the Garden City, Silicon Valley of India, has thousands of flavors and delicacies to offer, especially the colorful, aromatic, delicious street food that tickles your taste buds. The ones which are common on the Bangalore streets are the dosas, bel puri, vada pavs, and the most important one that stands out is the Golgappa. The pani puri, also known as Golgappa, is a popular street snack from the Magadha region of India, made with mashed potatoes spiced with chickpeas, onions, dry spices, stuffed with crispy hollow puris and dipped in tangy water, has the capacity to grab instant satisfaction. The Golgappa has different names all over India. It is called Pani Puri in Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and Karnataka. In eastern India, it's called as puchka and is also a famous snack in Bangladesh. This delicious snack of puris filled with tangy water is called Golgappe in northern India. Almost all of North India, except Haryana, refers to it as Golgappa. Do not confuse these with the very famous pakodas, but Pani Puri is referred to as pakodi in some interior parts of Gujarat. Literally translated from both those ingredients of the dish, puris and tangy water, pani ke patashe is what pani puri is called in parts of Haryana. The Golgappa vendors can be found at almost all nook and corners of the city. In some areas, they are scarcely placed. In commercial areas, you can find 2 or 3 Golgappa vendors in every street. The age group of these people ranges from 16 to 50 years. Some have inherited their forefathers' business, while some work under an owner for a daily wage. They are generally from North India, especially UP and Bihar. While the course of our survey, an interesting fact that we found out was most of them were employed by an owner who runs 8 to 10 stalls and pays them a mere sum of 3000 to 4500 a month. Let's see what a vendor has to say about his business. आपका नाम? विनोद कुमार। आपका भाई एज? मेरा है 23। आप कहाँ से हैं? हाँ, यूपी। आप एक दिन में कितना कमाते हैं? हम एक दिन में कम भी कमा सकते हैं, ज़्यादा जैसे क्या करें 200 भी कमा सकते हैं, 400 भी कमा सकते हैं, 800 भी कमा सकते हैं। आप पहले शुरू में कितने पैसे डाले थे? शुरू में तो क्या करें 1000 रुपये डाले, कुल मिला के 5000 डाले। और एक प्लेट में आपको कितना कमाते हैं आप? 4 रुपया कमाते हैं। एक दिन में कितना लाभ मिलता है आपको? बहुत गए 200, 300 लाख। आपको इधर का कौन कौन से लोग हैं कंपटीशन के लिए? खाली वो सामने शॉप के एक है कंपटीशन में। आप इसके लिए भाड़ा कितना देते हैं? 100 रुपया एक दिन का। इस बिजनेस में आपको क्या क्या तकलीफ होता है? इस बिजनेस में सुबह उठ के काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इसको क्या करें बनाने के लिए, और क्या करें आटा मैदा सबको रेडी करने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। आप कितने बजे शुरू करते हैं काम? 4 क्लास, मॉर्निंग 4 क्लास। आप एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? कम से कम 4 घंटे बिजनेस के लिए। आज अच्छा, सुबह से शाम तक कितना बजे तक? सुबह से लेके मिला के 12 क्लास हो जाता है, और सुबह 4 क्लास से 12 क्लास, और शाम को वही शाम को 12 क्लास। और आप एक दिन में कितने आवर खड़े रहते हैं? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। ये बिजनेस अब क्यों शुरू किया? ये बिजनेस में यूनिक के बनाने के लिए चलाए हैं, और पढ़ने लिखने के लिए। ये बिजनेस को आप अच्छे बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं? हम अपने बिजनेस के लिए अच्छे बनाने के लिए अच्छे लोगों को क्या करें, अच्छा खिलाना, अच्छा सीखना और अच्छे लोग आना, इसके लिए हम सबसे लोग से मिलते हैं अच्छी के लिए, और बिजनेस के लिए अच्छा बनने जो कस्टमर रहेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा, तो इसलिए और हम बड़ा बना सकते हैं, जैसे मसाल पूरी वगैरह वगैरह आइटम बना सकते हैं। बिजनेस में आपको और क्या तकलीफ होता है? इसलिए वही सुबह जो उठते हैं मॉर्निंग में काम करना पड़ता है, सुबह क्या करें आटा इसको लीजियाना बनाना, फ्राई करना और वगैरह वगैरह। फिर मॉर्निंग में जो खड़ा होते हैं इतने 3 o'clock से 9 o'clock तक, तो ज़्यादा दिक्कत है। The daily routine of a Golgappa vendor starts at 5 in the morning with the preparation of puris and to make all the ingredients ready within 2 in the afternoon. He starts his business at 4 in the evening, and almost until he sells all of his puris, he recklessly stands and toilingly prepares and serves Golgappas.
When enquired, we found out that they generally finish the business by 8 in the evening, and by the time they sleep it is 10. Let's see what the customers have to say about the Golgappas. Any random place that I can find. Golgappa is my favorite, and as soon as I see a stall, I just have to go and have a Golgappa. It's just a very lovely. Not particularly. Why do you like the Golgappa? I guess it's a very well balanced my life snack. You can have it without spoiling your appetite, and it tastes yummy. ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಕೈ ಚಂದ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ರಿಸೈಪ್ ಆಗ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇದೇ ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಶ್ರೀಕೈ ಚಂದ್ರು ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ರುಚಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ರುಚಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ. Hygiene is the biggest concern for eating street food, including Golgappas, due to the contaminated water and the hygiene levels of the vendor. A plate of Golgappas are sold at a price of 15 to 20 rupees, where 7 to 8 puris are served with a sukka. The vendor generally earns 8 to 10 rupees per plate. The Golgappa vendors on an average earn 1000 to 2300 a day, out of which 500 to 1200 is profit. It's a very hectic job, and generally the difficulties faced by them are competition, rent, owner's pressure and busy schedule. When asked why this job, some tell family inheritance, and majorly it's due to poverty and joblessness. Coming to the actual aim of doing the survey is to find out the business strategy of a Golgappa vendor. When asked regarding this, the Golgappa vendors told that they can sell the product better than others because they offer the taste according to the customer's requirements. Some feel it's due to the hygiene levels they maintain. But what we felt was people don't prefer a specific place or location over the 15 to 20 rupees Golgappa. So people are generally attracted to a nearby Golgappa vendor. And if there are 2 or 3 vendors in a busy street, once the customers start filling at one vendor's place, then the customers, when crowded, prefer to move to a second vendor instead of wasting time. Same way, the customers are drawn to the third shop if both are crowded.